Hello JEE aspirants, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya Educational Institutions. I am Pradnya, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम इन्फिनिटी लर्न। बच्चों हम जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है सर्कल्स। आज है हमारा 4th लेक्चर। आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स कैसे डिफाइन करनी है, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आए तो हम कैसे उसको डील करें, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सर्कल्स है तो वो कब एट 1 पॉइंट मीट करेंगे या कब वो 2 पॉइंट करेंगे, वो सारी कंडीशंस आज हम देखेंगे। उसके बाद आज हम देखेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन तो कल हमने देखा कैसे निकालना है। आज हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है सर्कल में। ठीक है, तो ये होगा आज का हमारा लेक्चर, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, पहले तो हमने देखा था कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है टू द गिवन सर्कल। अगर सपोज स्टैंडर्ड हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सपोज ये हमारा सर्कल है और देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट वो देते हैं हमेशा p ऑफ x1, y1। तो ये जो पॉइंट है p ऑफ x1, y1 इट इज एक्सटर्नल पॉइंट। अब कोई भी फिक्स्ड पॉइंट देंगे आपको और ये हमारा सर्कल है और सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन भी वो हमें देंगे। अब यहाँ पे आप रेडियस निकाल सकते हो, सेंटर निकाल सकते हो, राइट, इस सर्कल का, तो ये हमें पता है। अब वो क्या देंगे हमें, वो देंगे कि फाइंड टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट p ऑफ x1, y1 टू दिस गिवन सर्कल। टेंजेंट टू गिवन सर्कल बट इन विच वे इट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट p ऑफ x1, y1। तो ये एक कंडीशन दी जाएगी। तो अगर आपका टेंजेंट पास हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 टू दिस गिवन सर्कल, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है बाय एक्स इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस करना है बाय वाई इंटू y1, एक्स रिप्लेस करना है बाय एक्स प्लस x1 बाई 2 प्लस 2g इनसाइड x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2f, y रिप्लेस करना है बाय y प्लस y1 बाई 2 और कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा प्लस c इक्वल टू 0। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट p ऑफ x1, y1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, इन पर्टिकुलर लेंथ निकालनी है। तो देखो लेंथ मतलब क्या, ये पॉइंट हमारा p पॉइंट है। अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब अगर टेंजेंट है टू द गिवन सर्कल तो एट अ यूनिक पॉइंट वो क्या होगा, टच होगा टू द गिवन सर्कल। यही टेंजेंट की डेफिनेशन है। तो जिस पॉइंट पे आपका जो है टेंजेंट टच करता है टू द गिवन सर्कल उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसको हम सपोज ले पॉइंट ए। तो यहाँ पे जो लेंथ पी ए है वो हम निकालते हैं और ये निकालने का सिंपल फॉर्मेट है बच्चों, पी ए इसकी वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें आप x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 रखो, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इट इज पी ए। और देखो बच्चों ये है अंडर रूट ऑफ s1, स्टैंडर्ड s1 नोटेशन है। s1 मतलब क्या, हम रिप्लेस करते हैं x एंड y बाय x1 एंड y1 इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए हमें मिलेगी वो है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। सो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए। अब देखो कभी भी एक ही टेंजेंट मिलेगा क्या, अगर एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे p है तो हमें ऑलवेज 2 टेंजेंट मिलते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। तो पी ए और पी बी ये 2 टेंजेंट आपको मिलेंगे और दोनों की लेंथ सेम होगी। अब ऐसा क्यों होता है ये अब हम देखेंगे। तो पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) प्लस y(y1) प्लस x को रिप्लेस करना है बाय x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस करना है बाय y प्लस y1 बाई 2। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, ये अब तक हमने देखा। अब देखो अब वो क्या देंगे आपको, हमारे पास क्या है, 2 टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट p। अब जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं ये बताओ ए बी क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होगा, ए बी एक कॉर्ड है, राइट। सर्कमफरेंस के कोई 2 पॉइंट जो है ज्वाइन कर रही है एक लाइन एंड इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर।
तो जो ए बी है वो कॉर्ड है। तो क्वेश्चन जो जेईई मेन से एडवांस में मोस्टली रिपीट होते हैं वो इस कंसेप्ट से आते हैं, जहाँ पे क्या देते हैं, वो एक सर्कल देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट देते हैं, और वो बताते हैं कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट मिलेंगे और उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको ए और बी ये मिलेगा। तो अब आप बताओ ए बी की लेंथ क्या होगी, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, सपोज ये है ओ, सेंटर हम निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगी, ये हमारी रेडियस होगी ए ओ। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है हाई स्कूल लेवल पे, अगर आपने रेडियस, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट इन बिटवीन एंगल निकाला तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका एंगल है इट इज 90 डिग्री। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पीओ ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। अब देखो हमने पीओ ज्वाइन किया, ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारी एओ जो है ये है रेडियस आर, जो पी ए है वो क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सपोज इट इज यल। ये भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अंडर रूट जो आपका सर्कल का इक्वेशन है वहां पे x बाय x1 y बाय y1 हमें रिप्लेस करना है। तो L निकाल सकते हो आप, ये आपकी रेडियस है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटर जो है सपोज इट इज h, k, आपको x1, y1 पता होगा, आपको h, k भी पता होगा। तो यहाँ से आप ये जो पॉइंट P और O ये भी आप डिस्टेंस टोटल निकाल सकते हो, मतलब ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। अब देखो मेन पॉइंट, सपोज आपका ये एंगल थीटा है, सपोज ये आपका एंगल थीटा है। अब देखो बच्चों ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब आप आओ ट्रायंगल ए एम एंड पी, इसमें देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, टोटल जो एडिशन है वो होनी चाहिए 180। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब देखो ये जो टोटल एंगल है इधर से इधर तक ये 90 डिग्री है। अब ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा, राइट। तो ये पॉइंट है, तो देखो ये थीटा है और यहाँ पे आपको ये भी थीटा मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इस अगर आपने ट्रायंगल को चूज किया तो, ठीक है। सपोज हमने ये व्हाइट, आप व्हाइट ट्रायंगल को कंसिडर करो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि टोटल एडिशन 180 होती है। अब ये क्या है, देखो ये आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनका ये टोटल एंगल कितना है 90, इसमें से ये आपको कितना मिला 90 माइनस थीटा, तो टोटल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब देखो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, देखो ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ये आपका सेंटर है, ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होगा बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना ए एम है उतना ही क्या होगा बी एम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए एम प्लस बी एम, इट इज ए बी, लेकिन ए एम और बी एम तो सेम ही है, सो लेट अस टेक ए एम इज इक्वल टू एक्स। तो सपोज आपका ए एम अगर x है, इम्प्लाइज ए बी क्या होगा आपका 2x। अब देखो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको क्या पता है, देखो आपको पीएम पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पीएम निकाल सकते हो, और आपको एल पता है। तो देखो यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है ये है 90 डिग्री,
तो ये होगा हाइपोटेनस, ये है एडजेसेंट। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा आपको मिलेगा L बाई PM। और अब आप आओ इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो R जो है हाइपोटेनस है और जो आपका AM है जो आपको निकालना है इट इज X, तो जो AM है वो एडजेसेंट है, तो ये क्या होगा आपका X बाई R। तो देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो यहाँ पे X आप निकाल सकते हो क्योंकि R, L और PM स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो यहाँ से अगर आपने X निकाला, ठीक है, तो वो होगा आपका AM। अगर आप ट्वाइस करोगे AM का तो आपको AB मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है AB निकालने का। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों टेंजेंट का जो है लेंथ सेम होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट मिलेंगे, उन दोनों का लेंथ सेम होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सपोज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है राइट, तो इसको आप सिंपल बनाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे ही करते हैं। सपोज हमने देखो ये PMA ये एक ट्रायंगल लिया और PMA ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PMB। तो देखो यहाँ पे AM और MB ये दोनों साइड सेम है, उसके साथ देखो ये जो साइड आपकी है ये कॉमन है, तो ये भी सेम हो गई, उसके साथ ये एंगल भी सेम है 90-90। तो ये जो दो आपके ट्रायंगल्स है वो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स है राइट, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। तो एज दे आर कॉन्ग्रुएंट all the what we can say all the adjacent sides, ठीक है, ये साइड सेम होगी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होंगी, यही होता है कॉन्ग्रुएंस राइट, कॉन्ग्रुएंट सॉरी। तो ये होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से आपको मिलेगा AP इज इक्वल टू BP। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लेंथ सेम होगी, इसीलिए लेंथ जो है वो यूनिक है। तो ये है थियरी। नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स कैसे निकालनी है। JEE इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, आप इतने सारे बुक्स फॉलो कर रहे हो, ओके, JEE इट इज मोर देन इनफ, आप उनको फॉलो करो। और जो मतलब बुक्स आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताई है, अगर उन सारे बुक्स को आपने अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा और सारे प्रॉब्लम्स अगर आपने सॉल्व किए तो सही रहेगा, ठीक है। देखो ज़्यादा नंबर की बुक अगर आपने फॉलो की इसका भी कुछ मतलब नहीं है, आप दो बुक अच्छे से करो, दो बुक जो है अच्छी बुक लो और उनको इन डेप्थ अच्छे से पढ़ो तो ठीक हो जाएगा। तो सारे प्रॉब्लम्स करो, कहीं पे भी डाउट आए तो उस प्रॉब्लम को मत छोड़ो, पूरा उसको सॉल्व करो, लेकिन इन डेप्थ करो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो और पूरा करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स कैसे निकालनी है। देखो जय, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सिंगेज इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिंगेज इज गुड। अब आप देखो एडवांस का प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए मैं मान के चलूंगी कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, तो कंसेप्ट करने के लिए एनसीईआरटी इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिंगेज इज गुड। ओके, अब यहाँ पे देखो ये है आइडियल सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो सर्कल्स है एंड दे बोथ आर टचिंग ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। अब देखो दो सर्कल्स है तो हम एक सर्कल को C1 मानेंगे, उसका रेडियस हम मानेंगे R1, दूसरा जो सर्कल है उसके सेंटर को हम मानेंगे C2 और उसकी जो रेडियस है उसको मानेंगे हम R2, ठीक है। C1 एंड R1 दीज आर द सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ वन सर्कल, C2 एंड R2 आर सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ अनदर सर्कल। तो C1 R1 एंड C2 R2, अब इनको लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेंटर है ये है सपोज C1 और ये है C2, ठीक है। अब हम ज्वाइन करेंगे, ये है आपकी R1 और नेक्स्ट आप लो R2। ये है सबसे आइडियल सिचुएशन।
अब देखो यहाँ पे अगर आपने C1 C2 डिस्टेंस निकाला और अगर आपने R1 प्लस R2 किया तो देखो ये है C1 C2, दोनों का R1 R2 का एडिशन करोगे तो ऑब्वियसली सेम मिलेगा। तो यह है कंडीशन जहाँ पे दो सर्कल्स दे बोथ आर टचिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। उसकी जो कंडीशन है वो है अगर आप डिस्टेंस निकालोगे इन बिटवीन सेंटर C1 C2 इट मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो ये तो कंडीशन बहुत ईजी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एक रेडियस है R1, सेंटर है C1 और नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये है आपकी रेडियस R2, सेंटर है C2। अब देखो C1 C2 डिस्टेंस कितना बड़ा है, राइट? जब C1 C2 इज ग्रेटर दैन R1 प्लस R2, जब ये कंडीशन लगेगी तो वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, वो दोनों में कुछ गैप होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, ओके बेटा, okay, so if you are preparing for JEE exam, first so first thing is to build concepts, so please follow NCERT. Now I can tell about only mathematics subject, ठीक है। So first build up concepts, and while you are building up your concepts, see if you read some passage or any, what we can say, any paragraph in mathematics, then you will have some questions from, you can form your own questions or you can follow some books and solve questions based on that concept. So study some concept then solve problem, study some concept then solve problem, so that it will not become boring। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है, राइट? सिर्फ रीड करते गए तो थोड़ा बोरिंग सा होता है। तो पहले थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड गो ऑन। अब जो बुक्स फॉलो करोगे वो बुक्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए प्लीज़ गो थ्रू NCERT एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में प्लीज़ फॉलो सिंगेज। उसके साथ exam.com ये एक साइट है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। अगर आंसर मिलता है वेरी गुड, आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। तो ये थर्ड थिंग है। उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। ओके अनंत, ओके, आई विल टीच इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन सेज व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये है आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे आएंगे हम, ओके। नाउ सी हियर, दिस इज C1 and this is C2, okay, and see R1 and R2. See, this is your R1, okay, and next this is your R2. Now see, R1 plus R2 is greater than C1 C2 because here you are adding green and blue portion in between this portion twice, right? So here you will get C1 C2, if you calculate, it is strictly less than R1 plus R2, but it must be greater than modulus of R1 minus R2. If this condition satisfies, then only your two circles intersect each other at 2 distinct points. Now see why this condition applies. If you come to fourth situation, you will understand. Now see here, this center, suppose this is C1 and this center is C2, right? Now let us take R1 and R2. See, this is your R1, this is your R2, sorry, blue line, and next, okay, this one is your R1. Now see here, if you calculate C1, C2, okay, and if you calculate modulus of R1 minus R2. Now see here, R1 is bigger, R2 is smaller. What is R1 minus R2? If you remove R2, this small portion from R1, you will get C1, C2. Okay, when these two are equal at that point,
this situation will come. यहाँ पे क्या होता है, here you have one circle and second circle is lying inside circle touching at a point. Okay, so this is the in particular situation. Next, last situation is whenever modulus of R1 minus R2 and C1 C2, whenever C1 C2 is strictly less than modulus of R1 minus R2, at that time this situation will come where you have two circles but the one circle is completely inside the second circle and they don't have any point of contact. Okay. Okay, so let us start questions now. Now let us take the first question. So see, this is from JEE Mains 2020 और ये tangent के ऊपर best question है. So please go through it. So here they have given let the tangent drawn from origin. So here the external point is origin to the circle. So you are drawing tangent to the given circle from origin. Circle is x square plus y square minus 8x minus 4y plus 16 equal to 0. Touch it at the points A and B. Circle को touch करा at the point A and B. Then what is AB square equal to? So here they have asked what is chord of contact AB, square of AB. Okay, so let us start. Here they have given one circle. So first draw one circle. Okay. So whenever they will give circle, have what is radius and what is center of this circle. See, center is what? Here it is 2g and here it is 2f. 2fy, 2gf, 2gx. So center is minus g comma minus f. Center is what? Minus 8 by minus 2, minus 4 by minus 2. So it is 4 comma 2. So let us name it as O and it is 4 comma 2. Okay. Next, what is radius r? Please calculate what is radius r here. Radius r is under root of g square is minus 4 square 16 plus minus 2 square 4 minus c is what? 16. So this is under root 4 means 2. So here radius is 2. Okay. Next, from origin we need to draw two tangents and they are touching your circle at A and B. So please draw two tangents. Okay. Suppose here you have origin P of 0 comma 0. Now let us draw two tangents. They are touching your circle at A and at B. Okay, so draw two tangents. Okay, now see, I have already explained the theory. So how to do this? Now we will join what is PO. Next, they have asked what? AB. And we know what is the radius. Radius is how much? We calculated already, it is 2. So we know AO is 2. Okay, then we can calculate what is AP. What is AP? It is length of the tangent. Now what is length of the tangent? It is, see your point, your tangent, this is your tangent AP, it is passing through a point 0 comma 0. So this is x1 y1. Substitute in the equation of circle x1 y1 by what? X by x1, y by y1. So what is length of tangent? Under root of this whole expression but replacing x by x1, y by y1. So length of tangent L will be under root of 0, 0, 0, 0, 16, right? 16. So it is what? 4. Length of tangent is under root of this expression. So replacing x by x1, y by y1. So this is what? 4. Next, what is PO? What is PO? Use the distance formula. It is under root of 4 minus 0 square plus 2 minus 0 square. So it is 16 plus 4. That means it is under root of 20. PO. Okay. Now see, this angle is 90 degree. Tangent and radius angle is always 90 degree. Next, this angle is 90 degree. Now suppose this angle is theta. This is 90. So this angle is 90 minus theta. Theta 90, 90 minus theta, total is 180. Next, see, this is 90. This total is 90.
This is 90 minus theta. To balance out, this angle is theta. Now find cos theta in the biggest angle and in the smallest angle. Equate. What you will get? See, cos theta is equal to. Now we need to find what is AB. Now see, this is what? Suppose if we have OM is perpendicular dropped from center on the chord. We know a perpendicular from center on the chord always bisects chord. So these two are equal. What is AB? Twice of AM. AM plus BM is what? AB. So if AM is X, BM is also X. So AB is 2X. Okay, now come to this triangle. What is cos theta? This is hypotenuse, this is adjacent. So x by 2 is cos theta. Now go for the biggest triangle. Okay? So come to this triangle. Now what is cos theta? See, this is 90 degree. So this is root 20, this is hypotenuse and this is adjacent. So it is 4 by root 20. Now these two are what? Equal. Equate. X by 2 equal to 4 by root 20. Hence what is x? 8 by root 20. Now what is AB? X plus x, 2x. So 2x is what? 16 by root 20. Now can we solve for root 20? It is 4 into 5. Take 4 outside. Outside of square root 4 will become 2 root 5. So this is what? AB. AB is 2 8s are 16. So it is 8 by root 5. They have asked you what is AB whole square. It is what? 64 by 5. Okay? If you have any doubt here, please ask me. So the option C is correct. Okay? So follow this process. Now let's go for next question. Next question they have asked in JEE Mains 2021. Okay? Now see here they have asked the minimum distance between any 2 points P1 and P2 while considering P1 is on one circle and P2 point is on another circle, and they have given you two circle equations also. So whenever they will give you two circles, find what is C1, C2, R1, R2. So here what they have told you is you have one circle and you have another circle. And they have asked you find minimum distance. P1 is point anywhere on this circle, P2 is point anywhere on this circle. Then what is minimum distance between P1 and P2? We need to choose, right? Then what you will choose P1 and P2? We will choose P1 here and we will choose P2 here, right? And this is your minimum distance. Now how to find it? Do you know any idea? Do you have any idea here? See, find center C1, next find center C2. Okay, now join. Okay, now what we'll do? We'll find C1, C2. We'll find this whole distance. Now see what is this? R1. Right? What is this? R2. Now what we want? P1, P2. It is the minimum distance and they have asked this. This is what your minimum distance. Now how you will calculate? Suppose if you know C1, C2, R1, R2, then minimum distance is P1, P2. It is equal to C1, C2 minus R1 minus R2. Right? Total find C1, C2, then subtract R1, subtract R2, you are done. So please do this. Now see here what is center? This is 2G minus 10 and 2F is minus 10. So G is minus 5, F is minus 5. Center is minus G minus F. So reverse the sign. So here it is 5, 5. Now what is R1C? You have G as minus 5, F as minus 5, C as 41. So R1 is under root of G square, 5 square plus F square, 5 square minus C, minus 41. So R1 is under root of 50 minus 41, which is root 9. That means it is 3.
So here it is R1 is 3. Next, what is C2? This is 2G, this is 2F. So G is minus 12, F is minus 5. So center is minus G comma minus F, so it is 12 comma 5. Then find what is radius. So radius R2 is what? Under root of G is minus 12, F is minus 5. Okay, G square, how much? 144. F square 25 minus C is what? 160. So your R2 is under root of 4 plus 5, 9, 4 plus 2, 6, 1, minus 160. Again it is under root 9 equal to 3. Okay, so it is 3. Find now C1, C2 by using what? Simple distance formula. So what is C1, C2? C1, C2 is under root of 12 minus 5, 7, 7 square plus 5 minus 5, 0 square. So here C1, C2 is under root of 7 square means 7. Okay. So what is P1, P2? 7 minus 3 minus 3, which is equal to 1. Okay. So if you have any doubt here, tell me. So the answer is option A, 1. Okay. So please follow this process. So this is the question where we calculated what? Minimum distance between two circles. Actually, this is minimum distance between two circles. Now see, let us go for next question. This question is from JEE Mains 2021. Here they have asked you, you should choose the correct statements. Each circle have the same center. These two circles have no meeting point. These two circles have only one meeting point. And these two circles have two meeting points. This what? Two circles are intersecting at two distinct points. These two circles are touching each other at a single point. These two circles are far away from each other, like one is outside of another types, and they have same centers. You need to check condition for these two circles. Now what to do? First find C1, find C2, find R1, find R2. And then we already have seen if C1 plus C1, C2, distance between two centers, if it is equal to R1 plus R2, then meeting point is only 1. If modulus of R1 minus R2 less than C1, C2, less than R1 plus R2, then this condition will hold. You know, right? If both centers are same, they will have same center. And no meeting point means C1, C2, the center, between center distance should be strictly greater than R1 plus R2. Then this condition will hold. Check once again beta, is option C is correct. Check once again, we'll solve, okay. Okay, so let us find first C1, C2, R1, R2 and then let us check, okay. What is C1, C? Here 2G is minus 10, 2F is minus 10. So G is minus 5, F is minus 5. So center is what? Minus G comma minus F means 5 comma 5. Now what is R1? Okay. Here your G is minus 5, F is minus 5. Find R, it is under root of G square plus F square minus C, which is root 9, 50 minus 41, so it is 3. So your R1 is 3. Next find C2 and R2. Now here your 2G is minus 22, so G is what? Minus 11. F is minus 2F is minus 10, so F is minus 5. So here center is what? 11 comma 5 minus G comma minus 1 minus 5, so it is 11 comma 5. Find R2. What is R2? G square, it is 121 plus F square 25 minus C, it is minus 137. So R2 is under root of 5 plus 1 6, 2 plus 2 4, 1 minus 137, which is root 9 equal to 3, right? So it is 3. Now find what is C1, C2. What is C1, C2? Use distance formula. So it is 11 minus 5
Okay, so it is 6 square plus 5 minus 5, 0 square. So here C1, C2 is what? 6. Yes beta, yes, option C is correct. Okay? CN, you are correct, very good. Now see here, you got R1 plus R2 is 6 and you got distance between two centers of the circles as 6. Right? So here as C1, C2 is equal to R1 plus R2. So this condition holds. So here you have two circles, suppose this is C1 and this is C2, this is C1, C2 and this is what? R1 and this is what? R2. So R1 plus R2 is same as C1, C2. That's why option C is correct. Okay, very good beta. Okay, let's go for next question. Okay, now see this question, they have asked this question in JEE Mains 2022. Here they have given you, let the tangent at 2 points A and B to the circle x square plus y square minus 4x plus 3 equal to 0 meet at origin 0, 0. Then what is area of the triangle OAB? So here you need to find what is area of the triangle OAB. So first have diagram. You have one circle. Right? You have one circle. First find what is center. Okay. Center will come here, but for my adjustment I have pointed here. Fine. So what is center? See. Okay. So here 2g is what? Minus 4. And see 2f is 0. Coefficient of y is 0. So g is minus 2, f is 0. Center is minus g comma minus f. So it is 2 comma 0. Same time find what is radius also, right? So r is under root of g square minus 2 square 4, f square 0 minus c. So it is 4 minus 3 under root 1 which is equal to 1. So here radius is 1. Okay. Now see you have external point, it is what? Origin. So here you have origin O of 0 comma 0. You will have two tangents, point of contact they have given A and B. Okay beta, we will check. Okay, option A is correct, we will check. Now see, suppose you have point of contact here A and B. So we will draw what? Tangents now. Okay, so here we want to find area of OAB. So have triangle first. OAB. So it is a chord. This is called as chord of contact because the chord is formed by joining two point of contacts. This is chord of contact. Now we need to find area of this triangle OAB. That is our task. Now what we can do? We know our standard concept, right? So join all those lines which you need. So we will join origin, that external point, and your center and radius. Now we know what is radius. What is radius here? 1. Okay, suppose if it is theta, this is also theta. We know why it is. And this is your 90 degree because radius and tangent angle is 90 degree. And this is again your 90 degree. Let us have this point name as M. Okay. Okay. Now see, this is your tangent to this circle passing through 0, 0. So you can find length of the tangent. What is length of the tangent? Length of the tangent is nothing but under root of take equation of circle, replace x by x1, y by y1. What is x1, y1? The point through which your tangent is passing. So what is that point? Origin, right? So replace in this x by 0, y by 0, 0, 0, 0 and 3. So length of the tangent is under root 3. So here your OA is root 3, your OB is again root 3, right? Now see your OAB is isosceles triangle, right? OA is same as OB. So area of isosceles triangle, do you know? It is height into base.
Or see here we know OAM, it is right angle triangle. Again OMB, it is again right angle triangle. So we can find area of OAB, this total area as splitting to, right? First find area of what? OAM plus area of right angle triangle what? OBM. Now what is this? 1 by 2 height into base. So what is height here? OM. What is base here? AM. Plus ये हो जाएगा क्या? 1 by 2 into height. Height is what? OM. Base is what? MB. Now see, this will be your 1 by 2. OM is common. Inside you do AM plus BM. Okay. Now see, if this is what? This is your perpendicular dropped on chord. So perpendicular from center on the chord bisects your chord. So AM is same as BM. Replace AM by BM. So it is AM plus AM, 2 AM. So it will become what? 1 by 2 OM into twice AM. 2 to get cancelled. This is equal to OM into AM. Okay. So this is the thing. So we need to find what is OM, what is AM. Okay. So let's start. Let AM be X. Okay. We know 1. And by using distance formula, let us find what is CO. What is CO? It is under root of, see, we are finding this whole. CO, 2 minus 0 square plus 0 minus 0 square. So it is under root of 2 square, that means it is 2, right? So it is under root 4 equal to 2. Okay, now find cos theta. Now here what is cos theta? See here cos theta, it is 90 degrees, so this is hypotenuse, this is adjacent. So it is x by 1. And here what is cos theta? In the biggest triangle, this is right angle triangle. So this is hypotenuse and this is adjacent. So it is root 3 by 2. So here you got x as x by 1 equal to root 3 by 2. So your x is what? Root 3 by 2. And what is your x? Your x is AM. So you found what is AM. So AM is your root 3 by 2 into. Now let us find what is OM. Now see, this is equal to root 3 by 2. Now you need to find this OM. Okay. Now we need to find this thing. OM. Consider now this right angle triangle. Okay. Now see, you know this is hypotenuse AO square is equal to OM square plus AM square. What you want? OM square is equal to what now? Is equal to first AO square. It is root 3 square 3 minus AM square. Root 3 by 2 square 3 by 4. It is equal to what? 12 minus 3 by 4, which is 9 by 4. So what is OM? 3 by 2. So it is equal to how much? 3 root 3 by 4. Okay. So the answer is 3 root 3 by 4. Option B. Is it fine? Do you have any doubt? Please ask me if you have any doubt here. So here area of this triangle is 1 by 2 OM AM, 1 by 2 OM AB. So it is OM into AM. If you have any doubt here, ask me.
So option B is correct here. Okay. Now let us go for next question. Okay, now see the next question. It is from JEE Mains 2024 and here they have given you, if the two circles, okay, this is your square, x plus 1 whole square plus y plus 2 whole square equal to r square, and next is x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 equal to 0. If they are intersecting at two exactly points, then what is the condition on r? Okay, so here the standard condition is like this. So you have two circles and they are intersecting at 2 points. Now what is the condition here? If you find distance between two centers, it is strictly less than r1 plus r2 and it is strictly greater than modulus of r1 minus r2. Okay. This is the condition. Now let us find what is C1, what is C2, what is R1, what is R2. Hello beta. Now find please what is C1, what is C2, what is R1 and what is R2. Now see here, C1 is minus 1 minus 2, R1 is R. Minus 1 minus 2 and R1 is your R. Next find, okay, here 2g is minus 4, so g is minus 2 and f is again minus 2. So center is minus g minus f, so it is 2 comma 2. And what is radius? Find radius. Radius is under root of g square plus f square minus c. So it is under root 4 means 2. Okay, now apply the condition. Okay. So here the condition says, if you find C1, C2, C1, C2 less than R1 plus R2 greater than modulus of R1 minus R2. Now what is C1, C2? It is under root of 2 plus 1 whole square into 3 square 9 plus 2 plus 2 square 4 square 16 root 25 5. Okay, so you found what is C1, C2. C1, C2 is 5. It is less than R1 plus R2 means R plus 2 greater than R1 minus R2 means modulus of R minus 2. Now solve. From here you will get, first we will solve this inequality. So here you have R plus 2 is greater than 5. So R is greater than 5 minus 2. That means R is greater than 3. Next, take second inequality. So here you have modulus of R minus 2 less than 5. This implies what? Minus 5 less than R minus 2 less than 5. This implies minus 5 plus 2 less than R less than 5 plus 2. So you got minus 3 less than R less than 7. At the same time, your R must be greater than 3. Now choose interval for R. Now see, here you have minus 3, 3 and 7. The first condition says your R must be from minus 3 to 7. Second condition says your R must be strictly greater than 3. So you need to choose what? The common part, right? Your R must satisfy both of them at the same time. So you will take common part. So what is the common part here? See, the common part is this, right? Because here both the lines are coming. So your R is 3 less than R less than 7. So here, yes beta, 3 and 7 is the common part. So here the answer is C, 3 to 7. Option A is correct. Okay. Yes, bachcho, yes, very good. Option A is correct, right? See, you can choose option B also. देखो यहाँ पे 3 to 7 है, 3 to 7 के बीच में 5 to 7 भी आता है, राइट?
लेकिन हमको कभी भी इस तरह से डोमेन पूछा जाए या रेंज पूछा जाए तो हम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये ऑप्टिमम वैल्यू है, ये सबसे करेक्ट आंसर है कंपेयर टू 5 to 7। आर इसमें होगा तो भी आपका आंसर सही होगा 5 to 7, लेकिन 3 to 7 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now next question. See here, this question is from 2017 mains and they have given you have a point, external point p of 0, -2 and q is any point on the circle. Circle equation is given. So they have asked what is maximum value of pq whole square. So you need to find your maximum value. So let us do this question. So what we will do, first we will have circle. Okay, center is what here, see 2g is -5 and 2f is -1, so -j and -f will be what, center, it is 5/2, 1/2, this is your center. Now find what is radius. So your radius will be what, r equal to under root of g is -5/2, square is 25/4 plus f square, f is -1/2, its square is 1/4, minus is -5, so it is under root of 26/4 -5. So this will be what, under root of 26 minus 20/4, so it is under root 6/4. This is 2 3s are 2 2s are, so it is under root of 3/2. It is your radius. Okay, okay, so this is your radius, r equal to square root 3 by square root 2. Next you have one external point, suppose if it is here, it is p of what, 0, -2. Now see here you have this plane, this is suppose 1 2. So 0, -2 means this is your point, p of 0, -2. Next see the center is 5/2, 1/2. Okay, so it is 2.5, 0.5. 2.5, 0.5 means your center is here. And next radius is root 3/2. 3/2 means 1.5, root means something 1 point, right? So somewhere here. So actual diagram will be like this. So you need to find what, this is your p and this is your circle. So what is the maximum distance? Now please बताओ maximum distance क्या होगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जाऊँ तो ये minimum होगा, right? यहाँ से लास्ट एंड तक जाऊँ तो मैक्सिमम होगा। तो अब हमको क्या करना है, ये सेंटर है, राइट, और ये आपका क्या है, रेडियस है। तो आप क्या करो, सेंटर और p ये निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें r जोड़ो, तो यहाँ से हो जाएगा। तो सर्कल में कोई भी क्वेश्चन आए, प्लीज फर्स्ट हैव डायग्राम, फ्रॉम देयर यू विल गेट क्लियर आइडिया। ओके, सो फर्स्ट व्हाट विल फाइंड व्हाट इज pc. So what is pc here, distance formula, under root of, okay, 5/2 minus 0, so it is 5/2 whole square, 25/4 plus 1/2 minus of -2, so 1/2 plus 2 means what, 2 2s are 4 plus 1, 5/2. 5/2 square is how much, 25/4. Okay, so this is, see 25/4 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, 1 plus 1 यानी कि √2. 25/4 coming out of square root, it will become 5/2. This is your PC. Okay, so what is maximum distance? You calculated this. Maximum distance is PC plus R. This will be the maximum, right? यहाँ से लेके यहाँ तक. This is maximum and this is your PQ. So what is PQ? PC plus R. Do it. So PQ is equal to PC plus R. Now what is your PC? 5√2/2 means it is, okay, 5√2 divided by 2 plus radius is √3/2. This is your PQ, but they have asked you what,
6 plus 34. Okay, we'll do. Okay, I don't know the exact answer. We'll do this. If you have doubt here, ask me. They have asked actually what is PQ square in the question. Square this. So you will get first, this is a plus b whole square. So it is 25 into root 2 square is 2 by 2 square is 4 plus root 3 by root 2 square is 3 by 2 plus 2ab means 2 into 5 root 2 by 2 into root 3 by root 2. So this is nothing but 2, 2s are 4, 25 by 2 plus 3 by 2, it is 28 by 2 plus 2 to get cancelled, root 2 get cancelled. So this is 5 root 3. It is equal to what? 2 1s are 2 4s are. So it is 14 plus 5 root 3. ठीक है? So answer is here 14 plus 5 root 3. So option C is correct. Okay, if you have any doubt here, ask me. So here correct answer is 14 plus 5 root 3 बेटा. ओके, KS अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो बताओ कहीं पे भी प्लीज. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक इज कॉमन इन मैथमेटिक्स, नो प्रॉब्लम. देखो बच्चों, यहाँ पे इन्फिनिटी लर्न आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं. तो यहाँ पे आप जेईई मेंस के 20, एडवांस के 20 और AITS के 23 मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिसमें सारा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाएगा. ये पैकेज अवेलेबल है ऑन इन्फिनिटी लर्न वेबसाइट फॉर ₹5,999. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने यूज किया कूपन कोड YouTube 50 OFF तो सेम पैकेज आपको मिलेगा फॉर ₹2,999. ओके बेटा, ओके, नो डाउट. ओके, उसके बाद देखो इन्फिनिटी लर्न आपके लिए ला रहे रेडीनेस प्रेडिक्टर टेस्ट. तो अगर आप जेईई या बीट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप टेस्ट दे सकते हो. यहाँ पे आपको रैंक भी आपकी पता चलेगी इमीडिएटली. तो ये जो टेस्ट है, अगर आप फर्स्ट 1000 टेस्ट टेकर्स में हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिलेगी. वहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा बीट सेट 100 OFF. ठीक है, और अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हो, जब 1000 टेस्ट टेकर्स उन्होंने एनरोलमेंट ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा ₹499. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई सेशन पेशेंटली. प्लीज लाइक करो वीडियो को, प्लीज शेयर करो वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करो वीडियो के ऊपर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी लर्न चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Finally.